So good morning, everyone, and we'll start with the air pollution control devices. If you remember the last time, I think we had a discussion about the uh, how we can get control of these kind of air pollutants. You know about the topography, you know about the meteorology, you know about each and everything, how they are going to be released, and what are the sources, what are the impacts, and how they are going to be traveled from the source to receptor. Everything you have covered. But now main thing is that a design part, that is control mechanism, how these air pollutants can be removed, can rid of, can be controlled, can be taken care of. So it depends upon industry, it depends upon certain parameters, it depends upon what kind of pollutant you're going to handle, whether you're talking about gases pollutant or you are talking about particulate pollutant. Okay, so see, particulate and gases pollutants. So I told you last time, so I'm repeating this thing again. So basically, now this thing very important. What I'm going to discuss today and next class is very important as per the design of air pollution control devices are there. So I will be using frequently APCD, air pollution control devices. Okay, so rather than talking about any other thing, I will be taking a direct name APCD, air pollution control devices. So once you're talking about air pollution control devices, you need to take care of. Beta, I'm uploading a recording of Google Classroom at after every lecture. Fine. So take care of that. So basically, when talk about air pollution control devices, you have to take care about two things: particulate as well as gases pollutants. So I told you last time the gases pollutant may be your SOx, maybe your NOx, maybe carbon dioxide, maybe carbon monoxide, dioxide, and some other pollutants. Fine. And particular pollutants, I told you PM 10, PM 2.5, and even less than that. Okay, so you have to get rid of these kind of pollutants because these are very dangerous once they are being released from the industry. So that's why the industry need to install certain kind of APCDs, air pollution control devices, to get rid of these kind of pollutants. So for particulate pollutants, the particulate matter, the control mechanisms which are being used, which I will be discussing later on while I will be discussing the air pollution control devices. So these mechanisms are gravity settling, centrifugal, electrostatic, filtration, scrubbing. So I will be taking a example of each and every particular in coming slides. Okay. So when you're talking about gases pollutants, so in an industry, suppose gases pollutants are being released, the SOx are very high, NOx are very high due to their sulfur and nitrogen composition. Okay, then you have to use either adsorption or absorption or combustion or masking. Masking, I told you, it's reducing the background concentration. Masking is basically reducing the background concentration by combining with some other thing. So I told you, while you are going to go for air pollution control devices, designing details, you need to consider certain parameters. What are these kind of parameters? So these parameters, first of all, you need to look about the what is particulate concentration, what concentration you are handling actually. Then what size you are handling. So size के बारे में अभी बताने वाला हूँ, wait करो थोड़ा सा बेटा. Then what volume you are handling, what the composition, what the moisture content, what the temperature, all this parameter we'll be discussing in detail. But again, for deciding any APCD, first you need to consider these points in detail. Okay, so no doubt once you have considered these points in detail, then comes the design consideration. This is very much important. How much efficiency you are looking for. It's not every time you are going for 100% efficiency, not at all. It's not possible. It's not possible to get 100% efficiency. So if you want to have 100% efficiency, your cost goes up, pressure drop goes up. Pressure drop is delta P. I will be discussing no doubt in detail in coming lectures. Now, first of all, very first APCD. Very first APCD is the gravity settling chambers. Now, gravity settling chambers, as the name is indicating, that here the separation force or basic principle is gravity. Gravity. And what is that? I'm going to show you, but go through these points very fast. So these gravity settling chambers, they can work, they can operate till 1000 degrees centigrade effectively. So it's have applications in so many areas like pre-cleaners for removing dye dust produced by grinding the cement, clean so many industries. Raw coal, thermal coal dryers, furnaces. When you have a fine, we have a particle size
greater than 50 micrometer. Cement industry, dry lime kiln industries where the lime kiln is being operative. Then you have thermal particular coal dryers when you have the coal is there. You're going to dry a coal by breaking the size. Okay, then there are chances that the larger size particles they come to the air. Okay, so dust particle size is no doubt it's applicable to only when you have gravity setting chambers. It's more than 50 micrometer. Size is more than 50 micrometer. Okay, so types I'm going to show you, no doubt, the simple expansion chamber and multi-trace setting chamber. I'm going to show you. Just wait for some time. And the only force which is being applicable over here is a gravitational force. No doubt, I'm going to show you again in the coming slides. Now, mind this thing very importantly. Here in gravity setting chambers, the particles are removed only by reducing their horizontal gas velocity. By reducing their horizontal gas velocity. Okay, I want to show you, no doubt, in the coming slides. So mind it, it is only the horizontal gas velocity which is being reduced, and so that the particles they keep on settling under gravity and they fall in the hopper. I want to show you. Okay, so typical gas velocity, horizontal gas velocity is better like this. I'm going to show you. Just wait for some time. So typical horizontal velocity is 0.32 3 meter per second. We cannot reduce below 0.3. We cannot increase beyond 3 meter per second. Why? Just wait for some time. Now see this. All your answers will be given here. The first gravity setting chamber is being used in the industry is the expansion chamber. Why it's called expansion chamber? I'm going to show you very fast. You understand? So here you have a gas having a particulate matter which is present inside the gas from any industry, suppose cement industry, clean industry, coal industry, any kind of industry where the particle size is more than 50 micrometer. Suppose that is present in the air. When the present in the air, that air with that kind of particulate matter with particle size is more than 50 micrometer is taken and it's being fed to the expansion chamber. This is called expansion chamber because see this, as soon as it enters this chamber, the area increases. The area increases, pressure decreases. You know A1 V1 is equal to A2 V2. You must have read in plus 2. A1 V1 is equal to A2 V2. So gas is expanding. When the gas is expanding, the velocity decreases. Okay. So when the velocity decreases, see this. Here is the entry. Here is the exit. So this is the length of the chamber. So this is the length of chamber. So once the gas with the particulate matter which you want to remove from the gas enters from this particular part, it got expanded, means area increases. When the area increases, its velocity decreases. So it is, once the velocity decreases, you know inertia of rest or inertia of motion. Due to inertia of motion, the gas, air will continue travel in the straight lines, where due to inertia of rest, these particles they keep on dropping over here. They keep on settling under gravity because when the velocity is reduced, they cannot sustain themselves into the motion. They will come to rest. So once they come to rest, they will settle under gravity. So this is called expansion chamber or gravity settling chamber. See this, once they're traveling from this point to this point, it is only a horizontal velocity. This velocity is decreased. Moment it comes here, velocity is less. Here is more less, here is more less, here is more less, here is more less. So is the horizontal velocity is decreased. Once the horizontal velocity is decreased, no doubt the particles which are traveling in this air stream or gas stream, they will be falling down under gravity because they will not be sustaining themselves to in the motion. So more the horizontal velocity is decreased, more particles they will experience the gravitational force or their velocity is reduced, they keep on settling, and from here these particles are being removed. Okay, so this is the simplest case of gravity setting chambers. Now mind it, आगे मूव करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको बेटा. So for industry, suppose you are recommending this APCD, the air pressure control device, that is gravity setting chamber, no doubt you must know the particle size. Particle size should be very high. And see this, if I'm showing the gas outlet, the small particles I'm showing over here, these small particles are
very fine size particles. These fine size particles cannot be separated, cannot be taken care by this gravity setting chamber because the particle size is less. So that's why this expansion chamber, this gravity setting chamber is used only for larger particle size. Mind it, small size particles means having a size less than 50 micrometer, 40 30 micrometer, they cannot be handled by gravity setting chambers. Now one thing very important जो आगे move करने से पहले आपको बताना चाहूंगा बेटा. So suppose you are recommending this to industry, you are going to say sir horizontal velocity decrease करेंगे, तो horizontal velocity decrease करेंगे तो आपके particles drop down होते जाएंगे. Okay, so from this hopper, see this. So you need this much of area, yes or not? This much of area. And when you go to the industry, beta, because we have experience of the industries, and we generally see that industry say, okay, we don't have this much of area because industry आपको इतना बड़ा एरिया कभी नहीं देगी बच्चे. ठीक है, इंडस्ट्री में जाके बेटा आप जब जाओगे तब पता चलेगा आपको कि इंडस्ट्री व्हाट दे रिक्वायर मैक्सिमम एफिशिएंसी, दे वांट मैक्सिमम डिजाइन एफिकेसी इन द स्मॉलेस्ट एरिया प्रोवाइडेड. बेटा 10 मीटर स्क्वायर एरिया में तो कोई भी कर देगा, 20 मीटर स्क्वायर एरिया में कोई भी कर देगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यही भी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा. सपोज इसकी एफिशिएंसी निकाली आपने, इसकी एफिशिएंसी यही 90%, और मैं डेल्टा पी की बात कर रहा था आपको, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, और दोनों का डिफरेंस आपका डेल्टा पी आएगा, यस और नॉट? तो प्रेशर ड्रॉप, तो ये प्रेशर ड्रॉप के अक्रॉस ही काम होगा बेटा चीज के लिए. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो फटाफट आप सुनिए फटाफट. इसके लिए आपने इफेक्टिव एरिया निकाला 20 मीटर स्क्वायर के. सर इफ द पार्टिकल्स आर कमिंग इन द गैस and you want to remove from this particular horizontal velocity, decreasing horizontal velocity, and you have a gravity setting chambers, and if you want to remove 90%, you need 20 meter square area. Now industry says, okay, we want 90% efficiency by sure, but we want only it in 10 meter square area. So they are giving you only half of the area. So what you can do, this is only comes to experience and learning and technical knowledge or engineering innovations. Now come to this thing. See this now. This is again a same version of gravity setting chamber but improvised according to the industry requirements. I told you. What? Now industry says we don't have 20 meter square area. We want 90% efficiency again. So how you can improvise your design? This is something I'm giving you example, but once you go to the industry, you will get to know how to improvise the technical aspects. See this, what I'm doing over here. So I'm reducing the area, fine. So I'm using multiple tray. This is called Howard setting chamber multiple tray. Here what is I'm doing? What I'm doing, I'm working with horizontal velocity, no doubt, but the horizontal velocity is being divided parallelly across multiple plates. So what's the flow that was coming initially? Now it's being divided to multiple trays. So now the separation will occur on multiple trays, not only one tray or not only at one place, which we are discussing right now over here. Now it is working. Now it's not. It's working on multiple trays right now. The airflow, which was now earlier fed to this particular chamber, we have reduced the area 10 meters square. Now we have used vertical movement. The vertical area can be used. You know why nowadays in Delhi NCR you see the flat systems. In the flat system you can go for vertical construction, yes or not? You can go for vertical construction. The same concept is being used over here also. The same airflow is being divided parallel to multiple plates. Now separation will occur on each and every plate. This plate, this plate, this plate, this plate, this plate. Multiple trays you can handle. Okay, so from each and every plate the particles keep on settling. No doubt कम सेटल होंगे पर वो मल्टीपल ट्रेस में हो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी मल्टीपल ट्रेस के अकॉर्डिंगली अचीव हो जाएगी 90%. एंड दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट योर मल्टीपल ट्रे ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर. नाउ थर्ड पॉइंट, आगे मूव कर रहा हूं फटाफट में. थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्री सेज वी वांट इट इन 10 मीटर स्क्वायर but we don't want vertical, we want horizontal only. तो आप बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल भी चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए जो मैंने अभी आपको डिजाइन दिया मल्टीपल ट्रे, और मीटर भी 10 मीटर स्क्वायर चाहिए और एफिशिएंसी 90% चाहिए. बेटा यही इंडस्ट्री है और इसी इंडस्ट्री को बोलते हैं कि यहीं पे इनोवेशंस बेस्ट निकाला इंजीनियरिंग से.
तो ये डिजाइन कैसे इंप्रोवाइज करना है बेटा, ये विद टाइम आपको जब एक्सपीरियंस करोगे इंडस्ट्री में, धक्के खाओगे, पता चलेगा आपको। मैं सब आपको बता रहा हूँ बेटा इस चीज के बारे में। ओके, कैन यू एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ दिस अगेन? बेटा बेनिफिट इसका ये है कि नाउ वी हैव रिड्यूस द दिस हॉरिजॉन्टल एरिया, वी आर गोइंग टू वर्टिकल एरिया। सो वर्टिकल एरिया में वी हैव टू टेक अ मल्टीपल ट्रीज। इमेजिन करो मल्टीपल ट्रेज लगा ली, हालांकि ये इतना बड़ा नहीं होगा जो मैंने अभी पहले वाला बताया बेटा आपको, ये वाला। ओके, हिंदी में ही चलने दो। ओके 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 ओके, आई एम सेइंग दैट बेटे, अच्छा हिंदी भी बोल दूंगा, घबरा मत मेरा। Any disadvantages I'm going to let you know better soon, no doubt. I'm saying that the industry is saying that we don't have that enough area, like 20 meters square for your particular gravity setting chamber. Can you go for a 90% efficiency still, but the area is only 10 meters square. Only area is 10 meters square. So in that case, when industry is saying that you have only 10 meters square area, still they are working for 90% efficiency. So how you can improvise your design? So this is a way you can have what design you did for the horizontal, now you execute the design for the vertical. For the vertical. Now for the vertical, same airflow is coming in and you have designed accordingly this one, multiple trays. Multiple trays. So once you design the multiple trays, now the separation due to gravity is happening on each and every plate, rather than having a big chamber. Rather than having a big chamber, 20 meter square area, now I have a 10 meter square area. Now the separation is happening on each and every plate. This is the advantage. This is the thing. Okay, now I'm reducing the area with the same efficiency. Now, what is disadvantage? One student was asking about disadvantage. Disadvantage is that now you have to have a spacing intact between these two plates. If the spacing is not intact, then what will happen? No doubt you know that if the spacing is not intact between these two plates, there are but obvious chances that the all already settled particles may get entrained back into the air which is flowing in between these two plates. कर लो इमेजिन आप, कर लो इमेजिन, दो प्लेट रख लो अपने बीच में, कभी देखो दो प्लेट रखो ऐसे, two plates, when you pass air in between, if the spacing is very less, there may be chances that the already settled particles on the plate may get entrained back into the air itself. So this will reduce the efficiency, working efficiency of the cell chambers. So you have to be very careful while designing these kind of things. So it's not like that you will get benefits every time. So there may be design failures also. So you have to look for the design failures also. Because design will be efficient only when you have a failures. Okay. Now, third thing, very fast. Now industry says we want 90% efficiency. We don't want vertical multiple tray columns. We want horizontal only. Now it's a challenge for you again. Now in that case, this is the something which you can really improvise on, you can innovate upon, you can propose upon. That is baffle chamber. Now see the baffle chamber. Now how it is happening? It's a vertical. It's a horizontal. Now once horizontal, what I'm doing over here, mind it. See this. I have a baffles. These are the baffles. What I'm showing over here. Now, if you see the compare with the first one. In the first one, the air was coming in, horizontal velocity decrease, going out, going out, going out. But if you see this third one, it is still horizontal velocity, but in the inlet and outlet, between inlet and outlet, I have placed some certain baffles. These baffles are called obstructions. These obstructions are actually creating a turbulence. Obstruction are creating a turbulence. Now, what is actually that turbulence? I'm going to show you. I'm going to tell you, sorry. वो turbulence क्या होती है, उसका क्या benefit होता है? बेटा एग्जांपल देता हूं आपको, इसको बेटर समझ आ जाएगा। आप रोज सुबह घर में दूध या चाय पीते हो, है ना? जब चाय पीते हो तो आप क्या करो, दूध और चाय में शुगर डिजोल्व करो बेटा। टेक अ स्पून विथ शुगर
put that sugar along with spoon in your milk or tea. Now stir it vigorously. Stir the sugar in the milk or tea vigorously. Once you stir it vigorously, remove the spoon. You will see that सेंटर में आपके वोटेक्स बन जाएगा वोटेक्स, बीच बिल्कुल बीच में वोटेक्स बन जाएगा. तो जैसे ही वोटेक्स बन गया उसको छोड़ दो. जो स्पून आपने बाहर निकाला था उस स्पून को, सिंपल स्पून को बड़े प्यार से इसके साइड में डिप कर दो, ग्लास में खड़ा कर दो उसको. जैसे उसको खड़ा करोगे तो आप देखोगे सारा वोटेक्स टूट जाएगा. करके देख लेना. आ जाओ. और जो मैंने बड़े प्यार से स्पून यहाँ पे बार में डिप किया है, बार में यहाँ पे स्टैंड किया है वोटेक्स को तोड़ने के लिए, इसको बोलता हूं बैफल. और ये बैफल क्या करती है? बैफल ने टर्बुलेंस क्रिएट करके यहाँ पे एक टर्बुलेंस लेवल क्रिएट, इसके अराउंड टर्बुलेंस लेवल क्रिएट हो जाएगा स्पून के. देखना जरा ध्यान से देखना, जहां पे आपने स्पून रखा है वहां पे एक टर्बुलेंस लेवल क्रिएट हो जाएगा. टर्बुलेंस क्या होता है? विगरस मोशन ऑफ द फ्लूइड. अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है. देखो, एयर विद द डस्ट पार्टिकल्स कम्स इन, instead of going straight, it is now going like this direction. See this? Okay. बट इसमें वेलोसिटी कैसे मेंटेन होगी बेटा? वेलोसिटी मेंटेन इसमें हम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, फ्लो रेट के अकॉर्डिंग, डेल्टा पी के अकॉर्डिंगली. बेटा मैं पहले बता चुका हूं, उसको पढ़ लेना एक बार. बेटा वेलोसिटी जो मेंटेन करते हैं ना वो डेल्टा पी के अकॉर्डिंग मेंटेन करने हैं. नो डाउट यहाँ डेल्टा पी ज्यादा होगा. डेल्टा पी इज प्रेशर ड्रॉप. क्यों प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा? बेटा जितनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है प्रेशर ड्रॉप ज्यादा आएगा. यस और नॉट? और पहले वाले केस में ऑब्स्ट्रक्शन कम थी, प्रेशर ड्रॉप कम होगा. और यहाँ प्रेशर ड्रॉप ज्यादा आएगा. बेटा प्रेशर ड्रॉप ज्यादा क्यों आएगा आपका? मैंने अभी बताया था आपको, जितनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा आएंगी प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा बेटा. ठीक है. तो उस प्रेशर ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी मेंटेन रखते हैं इसके लिए. एंड नो डाउट वेलोसिटी मेंटेन रखते हुए हम ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देने से टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं. और नो डाउट क्या होगा, जैसे आपका एयर आएगी बेटा, ड्यू टू इनर्शिया मोशन स्टार्ट ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइंस एंड इट ट्रांसफर्स इट्स डायरेक्शन टू दिस पर्टिकुलर वे. But the particles, they cannot transverse their directions due to inertia of rest. So they keep on striking and removing. Yes or not? So this is one way of removing the particles with the design improvisation. And this is again a category of gravity setting chambers with a baffle chamber. Okay. So you go through these kind of things in detail. मैं आपको बहुत डिटेल में बढ़ा चुका हूँ इसके बारे में. Although this is not anything written over here, but you can go through my video again. जो मैंने बोला है जिसके लिए. एंड सेम थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड इन योर क्विज, इन एयर पोल्यूशन एंड योर एंडसैन. ओके. तो ये चीजें हैं बेटा. एंड स्टिल आई एम सेइंग दैट these kind of gravity chambers are not being effective for the particle size which is less or which is less than 40 micrometer. Okay. Yes, if we increase the number of baffles, then more number of pollutant will drop. Yes, this is okay, but why there is a requirement? Why there's a requirement? Design accordingly, because you want to reduce the size. Once you want to reduce the size, you want to minimize the area. Why there's a purpose of putting a baffles again and again? Because I'm just, इसके मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा. ये बात भी नहीं बता रहा बेटा, कोई बहुत चीजें इसमें डिजाइन में, हमारे पास टाइम नहीं है उतना. सुनो कैसे बेटा, बैफल बढ़ा दूं मैं. सुनो मेरी बात, यहां तक मेरी 90% एफिशिएंसी आ गई और आगे 3 बैफल बढ़ाने पे मेरी 98% आ रही है, तो मैं 3 बैफल कभी नहीं बढ़ाऊंगा इंडस्ट्री में भाई. इंडस्ट्री बोलेगी 90% पे सफिशिएंट हूं. अब मेरी बात समझो, 3 बैफल लगाने पे 90% एफिशिएंसी आ गई पार्टिकल सेपरेशन की, 2 बैफल और लगा दूं तो 98% आ जाएगी. इंडस्ट्री बोलेगी 2 बैफल और लगाने पे 98% आ रही है, पर वो नहीं देख रही मैं. इंडस्ट्री बोलेगी आई एम सीइंग दैट कि 2 बैफल्स आर कंट्रीब्यूटिंग 8% ओनली एंड वेयर द 3 बैफल्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग 90%. आई शुड गो फॉर 90% एफिशिएंसी. दिस इज इंडस्ट्री बेटा, दिस इज इंडस्ट्री. क्यों? सोचो, यहां से यहां तक डेल्टा पी क्या होगा और यहां से यहां तक डेल्टा पी क्या होगा, उतना फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको. इंडस्ट्री ये सोचती है. ठीक है. डोंट वरी दोज हु आर जॉइनिंग लेट और डिसकनेक्टेड, आई एम गोइंग टू अपलोड माय होल वीडियो ऑन गूगल क्लासरूम सो दे कैन लिसन टू द लेक्चर अगेन. ओके, इज दैट ओके एवरीबॉडी? तो ये चीजें बेटा सोचनी है. यहाँ पे यही सोचोगे 4 की जगह 8 कर दो, 8 की जगह 12 कर दो. अरे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. जहां तक आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है बच्चे, फॉर अनदर 4% व्हाई वी आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी इन, व्हाई ह्यूज मनी? बिकॉज ऑपरेटिंग कंडीशन बढ़ जाएंगी आपकी, मेंटेनेंस कंडीशन बढ़ जाएंगी आपकी.
So it is again the same thing which I am discussing. Okay, you have to cut somewhere, where you have to cut somewhere, you have to see everything: design, maintenance, cost, delta P, everything you want to, everything you want to see over this. Okay, so I'm done with gravity chambers. Okay, so I've explained you enough. Now come to cyclones. Now this is something very important, beta. Now, before actually going into detail of cyclones, I will let you know what are cyclones. Now, gravity setting chambers are being used when the particle size is very high, that is more than 50 micrometer, where you can execute the gravitational forces to for the separation of particles. When the particle size is less, which less, जो मैंने अभी बताया आपको, पीछे देखो आप, जो यहां से निकल गए बाहर, once these particles are getting away from the outlet, this means these particles cannot be removed by the gravitational chamber because the particle size is less. So once the particle size is less, they cannot be removed by gravitational chambers. So imagine imagine an industry who is releasing these kind of particles where particle size is less, 10, 20, 30, 40, near about 30 by micrometer, 20 micrometer. You cannot recommend the cannot recommend gravity setting chambers for that, because you know these 20 micro, 30 micrometer cannot be separated by gravity setting chambers. So in that industry, first of all, you just get to know what is the particle size. तभी मैंने आपको बताया था, पहली स्लाइड देखो ध्यान से, ये देखो, एपीसीडी प्लान करने से पहले आप ये करोगे, देखो हर चीज मैं बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज 20 है, 20 माइक्रोमीटर है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे चलो ग्रेविटी लगाते हैं, वहां पे आपको पता है ग्रेविटी वहां पे काम ही नहीं करेगी, उसकी एफिशिएंसी 10% भी नहीं आनी है आपकी ग्रेविटी चैम्बर की। तो आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सब कुछ स्पेंड कर रहे हो वहां पे, यू आर गेटिंग 10% एफिशिएंसी फॉर नथिंग, बिकॉज आपने ये फैक्टर कंसीडर किए नहीं आपने। So you know in that case cyclone separator is being effective. अब ये cyclone separator क्या होता है बेटा, समझ लो फटाफट एक में से फटाफट। Now these cyclone separators are like that. Now अब यहाँ पे आपको बाहर से वेलोसिटी देनी पड़ेगी थोड़ी सी। वहां पे क्या होता था ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर में, ओनली ग्रेविटी इज इफेक्टिव, जहां ग्रेविटी इफेक्टिव है तो भाई न्यूटन के लॉ से ग्रेविटी काम कर रही है वहां पे। बट यहाँ पे आपको suspended gas, see this, I'm going to show you, the suspended gas particle mixture is fed tangentially to the inlet at a high velocity and pressure. और हाई वेलोसिटी और प्रेशर कहां से मेंटेन करना पड़ेगा, ये हमें बाहर से एक ब्लोर लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, ब्लोर लगाना पड़ेगा, जो इस सस्पेंडेड गैस पार्टिकुलर मिक्सचर को हाई वेलोसिटी और हाई प्रेशर से एंटर करवाएगा। क्यों, अभी दिखाने वाला हूं, एक पढ़ लो इसको एक बार। So once it is being entered tangentially to the system, I want to show you, this creates a spiral flow within the system, and the suspended particles which are present in the gas mixture, they are thrown centrifugally outwards. And when they are thrown centrifugally outwards, I'm going to show you, and these particles collide with the walls of the container or the cyclone, and they get collected at the bottom. See this I'm showing over here. जो बताया अभी देख लो, ये देखो जरा, जो मैंने बताया था, ये देखो यहां पे एंट्री हो रही है गैस की टेंजेंशियली, dirty gas enters. Dirty gas means the gas containing a particular matter which you want to remove. Okay, so one is being entered tangentially. See this is see, this is cylinder, it's being fed tangentially to the cylinder. So once it's entered with a high velocity and the pressure, it gets into a spiral motion over here. See this, it's showing over here, spiral motion. So once it is spiral motion, the particle which are present in the gas, they will be exerted a centrifugal force. They will, once they exert centrifugal force, they will be thrown outwards. Once they're thrown outwards, they strike the walls. Once they strike the walls, they slide down, get collected at the bottom. And the clean gas make a inner vortex, because why? Because clean gas means the gas which comes at here particular point, bottom point, exactly this point, it's almost free from the particular matter. When the almost free from the particular matter, it becomes light. Once it becomes light, it travels through inner vortex through
out. See this. A single cyclone, now this is a single cyclone separator, creates a dual vortex, outer vortex and inner vortex. Outer vortex is for the dirty gas, inner vortex is for the clean gas. See this. The main vortex, main vortex means this one, outer vortex, spiral downwards, carries most of the coarse dirt particles. So once it reaches here, where all the particles, almost all the particles have been exerted a centrifugal force, thrown outwards, the gas now becomes lean. Lean means it's now getting rid of particles. So it becomes lighter. So lighter gas have also always a tendency to move up, not at the bottom. Yes or not? और यहां तक प्रेशर ड्रॉप हो जाना इसका पूरा. So the inner vortex created near the bottom spiral upwards and carry fine dust particles. फाइन डस्ट पार्टिकल्स क्या मैं आगे बताने वाला हूं बेटा. कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होंगे नो डाउट लाइक लेस देन 10 माइक्रोन मीटर जो इसमें से भी रिमूव नहीं होंगे. ठीक है जी, क्योंकि ये हर पार्टिकल्स को पता ही आपको बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है. आपको फॉर्मूला पता है. मास होना जरूरी है. अगर मास ही बहुत कम है, 10 माइक्रोन से कम मास है, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी नहीं बेटा आपकी. तो लगेगी नहीं तो इतने फाइन पार्टिकल्स रिमूव नहीं कर पाएंगे बेटा. If the dust particles are dropped down, beta, it is possible that they come in contact with vortex again. Yes, beta. You are right. Not exactly right, but ये क्वेश्चन है मेरा एक सबसे जो स्टूडेंट ने पूछा मेरे से. बेटा वैसे उससे ट्रेन नहीं करेंगे बेटा. जो तूने क्वेश्चन पूछा ना, somebody have asked the question कि अगर आपके particles, dust particles are just dropped down, it's possible that they might come in contact with the vortex again and train again. It cannot. Why? मैं बताता हूँ इसके बारे में. बेटा क्या होता है कि ये वोटेक्स जो बनता है एक लिमिटेड रीजन में बनता है. यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, तो पार्टिकल्स ये हम बहुत अंदर स्मूथ बनाते हैं. स्मूथ तो इधर बहुत स्मूथ बनाएंगे और इसका स्लोप बनाते हैं. ये देखो स्लोप दिखता है. तो चांसेस क्या करते हैं कि जैसे ही वो स्ट्राइक करे स्लाइड डाउन नीचे, स्लाइड डाउन नीचे. तो ये डिजाइन में लिखा जाता है कि बेटा कि इसकी स्लोप मेंटेन रखो, इसकी अंदर स्मूथनेस मेंटेन रखो ताकि ये फटाफट स्लाइड करे, नीचे मूव कर जाए. हाँ, अगर ये स्मूथ नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो जाए. तो डस्ट इकट्ठी हो जाए तो बहुत बट ऑब्वियस चांसेस है दे कैन एंट्रेन अगेन इनटू द सिस्टम अगेन. ओके, इज दैट ओके एवरीबॉडी? तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा. इसके लिए हम उसका डिजाइन कंस्ट्रक्शन डिटेल में रखते हैं जिसके लिए बेटा. सो दिस इज कॉल्ड साइक्लोन सेपरेटर. इज दैट ओके? So this is basically cyclone separator. You can go through this conditions very fast. Okay. Pressure drop दे रखा है, gas flow rate दे रखा है बेटा. It can be reverse flow straight through. जो मैं अभी बताया ये reverse flow straight through की एप्लीकेशन है. Fluid gas entry points मैं अभी शो कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में क्या होते हैं. It can be tangential, अभी शो किया मैं tangential, और it can be scroll or swirl vein type. बेटा अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे. साइड में रेखा आपके लिए. ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं. डस्ट पार्टिकल ये साइज होना चाहिए बेटा, कंसंट्रेशन होना चाहिए. ओके, सो सी साइक्लोन आर एफिशिएंट इन रिमूविंग लार्ज पार्टिकल्स. लार्ज पार्टिकल्स अगेन लाइक दिस कैटेगरी फाइन, बट दे आर नॉट एफिशिएंट विद स्मॉल पार्टिकल्स. रिवर्स फ्लो बेटा वही जो अभी बताया वो रिवर्स फ्लो टाइप ही है, क्योंकि वो रिवर्स फ्लो करके बाहर आएगा ऊपर. ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको जरा. No, temperature beta not high beta. It operating temperature means it can work at 100 till 100 degree centigrade बेटा. क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोला ये वाला क्योंकि इंडस्ट्री में जहाँ पे यूज होता है ना बेटा, वहां पे ऐसा है कि आपके जो गैसेस हैं वो इंडस्ट्रीज चिमनी से आ सकती है. चिमनी से तो चिमनी की गैसेस बड़ा हाई टेम्परेचर पे होती हैं. सो इट कैन ऑपरेट. ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा बेटा इसमें, मीन्स इट कैन ऑपरेट. उसके बाद क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे गैसेस का नेचर चेंज होता है बेटा. ओके, सी दिस नाउ जो मैं आपको बता रहा था बेटा. सो दिस इज टेंजेंशियल बेटा इनलेट जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, एंड दिस इज स्क्रॉल एंड स्विर्ल वेन टाइप. तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन. सो दिस सी दिस, यहाँ पे जो आपका अंदर वाला वो है थंबल है, इसके क्रॉस हम स्विर्ल वेन डिसाइड कर देते हैं. तो नो डाउट पार्टिकल सीधे आ रहे हैं, पार्टिकल सीधे आ रहे हैं और सीधे आ रहे हैं, लेकिन वो मूव ऐसे कर रहे हैं क्योंकि अंदर स्विर्ल वेन्स लगाई हुई है. तो डिजाइन आप कैसे भी वेरी कर सकते हो बेटा, ये आप पे डिपेंड करता है. यही दिखाया बेटा ग्रीक मैंने अभी दिखाया. व्हाट इज फ्लू गैस एंट्री पॉइंट्स? ये फ्लू गैस एंट्री पॉइंट अभी दिखाया मैंने अभी आपको कि फ्लू गैस कैसे एंटर कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट
साइक्लोन। अब इसमें बेटा ये ग्रेविटी से ज्यादा इफेक्टिव है, नो डाउट, फॉर रिमूविंग अ पार्टिकल साइज लेस देन 50 माइक्रोमीटर और नियर अबाउट 25-30 माइक्रोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटे इससे, फिर वही चीज कि यहाँ पे सेपरेशन तो हो रही है, बट यू नीड टू एक्सर्ट प्रेशर। ये डर्टी गैस जो इन हो रही है, टेंजेंशियल इन हो रही है, ऐसे नहीं इन नहीं हो जाएगी बेटा। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स ओवर हियर, यू नीड टू यूज कंप्रेसर ओवर हियर, जो इसको प्रेशराइज करके अंदर फीड करेगी, तभी फ्लो करेगा इसके अंदर। तो no doubt this is again energy intensive phenomena where you want to use these kind of energy instruments, sorry, equipments to give energy to the entry gas so that the separation can be obtained. Okay, ये देखो ये रहा बेटा जो बताया था, ये इंडस्ट्री के देखो बेटा, ये इंडस्ट्री वाले होते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्पेशली आपके लिए लेके आए कि ये इंडस्ट्री साइक्लोन्स हैं। ये देखो कितनी स्लोप है बेटा, आ देखो स्लोप इसकी, अब देखो जरा स्लोप, और अंदर से बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं इसको, ताकि ये जैसी टच करे, जो बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा, जैसी टच करे वो स्लोप डाउन करके नीचे आ जाए सीधा। अब देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेटा, ये देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये लगे आपके ब्लोअर्स, हैवी प्रेशर ब्लोअर्स, जो इसको इसकी टेंजेंशियली एंटर करेंगे इसके बीच में। देखो जरा टॉप पे दिख रहा है, लेकिन इसकी एंट्री यहाँ पे है, टेंजेंशियली एंट्री है इसकी, नो डाउट। तो ये ब्लोअर्स हाई पावर, हाई मतलब हाउस पावर के होते हैं, ताकि हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी मेंटेन करें उसके बीच में। तो ये सारा मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया इसके बारे में। अब इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना आप। एक चीज है, अब इसमें कई बार हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा बच्चों को पढ़ने के लिए भी बोलते हैं, बेटा खुद भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा बेटा। तो एक बार हमने क्वेश्चन पूछा था बच्चों को, इसमें से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नो डाउट, कि व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग इन साइक्लोन सेपरेटर। व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग इन साइक्लोन सेपरेटर्स। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लिख के आए थे कि सर्किट जोड़ दिए, पटाखे बजा दिए वहां पे, है ना, किला। नॉर्मली शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब आपकी वायर जोड़ जाती है। नो, ये आंसर नहीं है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है बेटा, जो बच्चों को बताया भी था, थोड़ा बच्चों को पढ़ने के लिए भी बोला था हमने। ये अब देखो जरा यहाँ पे बेटा, ये इनलेट गैस आ रही है, और इनलेट गैस इज डर्टी, डर्टी ना, बिकॉज इट्स कंटेनिंग पार्टिकल्स, ओके, एंड क्लीन गैस इज गोइंग थ्रू इनर वोर्टेक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर थंबल, इसको थंबल बोलते हैं, एयर आउटर थिम्बल। अब अगर इसकी डेप्थ में मेंटेन नहीं रखूंगा तो हो सकता है कि इनलेट गैस और आउटलेट गैस आपस में मिक्स हो जाएं, एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग इन साइक्लोन। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग शॉर्ट सर्किटिंग। बेटा मैंने आपको बताया इसमें दो वोर्टेक्स बनते हैं, इनलेट इनर और आउटर। आउटर जो वोर्टेक्स होता है वो होता है डर्टी गैस का, इनर वोर्टेक्स होता है क्लीन गैस का, जिसमें पार्टिकल रिमूव हो चुके हैं। और जो इनर वोर्टेक्स है वो आउटलेट थिम्बल से बाहर निकलेगा, ये रहा आउटलेट थिम्बल। और ये आउटलेट थिम्बल के अंदर डेप्थ मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। कहां डेप्थ मेंटेन करनी पड़ेगी, इसके बीच में, देख यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, यहां से बाहर होगा वो। पर वो जहां भी होगा, यहाँ पे जहां से बाहर जाएगा, ओके। तो उस केस में अगर इसकी डेप्थ मेंटेन नहीं रखते, तो इसकी डेप्थ ऊपर तक है, यहां तक है, तो चांस है ये इनलेट डर्टी गैस के साथ आउटलेट गैस मिक्स कर दे। आउटलेट गैस इज क्लीन, इनलेट गैस इज डर्टी, सो इफ द इनलेट एंड आउटलेट आर मिक्स, एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, जब वायर जुड़ जाती है आपकी। So this is short circuiting in cyclone separator. So efficiency down. Why efficiency down? Because what's the clean gas is now there, it's going to mix with the dirty gas. Now dirty gas particles are coming out. So you want efficiency 90%, but it's coming down to 50% because inlet and outlet are getting mixed. So that's why you need to take care of these kind of things. Okay. So these are the industry applications. You can just go through beta. Used in many applications for pre-cleaning, sanding, recovery and salt particles, food catalysts. So many applications are there बेटा इसमें। ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे मूव कर जाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है बेटे। ठीक है, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस क्या है बेटा, एग्जांपल देता हूँ। आप देखो क्यों इंपॉर्टेंट है हर जगह पे साइक्लोन, फिर हम मनी भी स्पेंड करते हैं। आपने ड्राई मिल्क देखा होगा ना बेटा, घर में ड्राई मिल्क यूज होता है, और पूरे वर्ल्ड में यूज होता है ड्राई मिल्क, पाउडर मिल्क एवरीडे का जो यूज करते हैं। अब सोचो, अब जब ये यूज करते हैं तो इंडस्ट्री में जब पैक होने से पहले इसको ड्राई करते हैं बेटा। क्यों ड्राई करोगे, अगर ये सफिशिएंट ड्राई नहीं है, इसमें मॉइस्चर रिटेन रह गया थोड़ा सा उसके बीच में, तो मेरे ख्याल से जब पैकेट खोलोगे तो उसमें फंगस लगी होगी,
और एक पैकेट में फंगस लेगी मिली, दिस मींस एवरीडे कंपनी क्लोज्ड। सो आपको परफेक्शन पे वो ड्राई पाउडर मेंटेन करना पड़ता है। अब वो ड्राइनेस कैसे मेंटेन करेंगे, उसमें मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है? तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये पाउडर पड़ा हुआ है, ये वाला मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो पैकिंग के लिए जा रहा है। सो व्हाट यू डू, you pass a hot air over this conveyor belt carrying the milk powder। जब हॉट एयर पास करेगी तो हॉट एयर का पर्पस क्या है, इसमें मॉइस्चर रिमूव करना। लेकिन हॉट एयर टेक अवे अलोंग विद इट अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ मिल्क पाउडर, उड़ा के लेके जाएगी पक्का। तो नो डाउट नो, ये एयर यहां से बाहर निकलेगी ड्राई करने के बाद, हम उसको एकदम से रिलीज नहीं करेंगे, उसको हम फेड करेंगे साइक्लोन सेपरेटर के अंदर। Why? Because the air which is coming out from this particular section is carrying a very important food particles which are milk powder. So this air is being fed through blower through the cyclone separator, और इस साइक्लोन सेपरेटर से पार्टिकल सेटल होकर नीचे आएंगे, वो क्या आएंगे, आपके फूड पार्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप रिसाइकल बैक करोगे। So it's not like that every time it's being used for the waste, no doubt it's being used for important applications like I'm discussing over here, okay? So there are so many applications beta in industry. So these are advantages, drawbacks हैं बेटा, मैंने आपको बता ही दिए आपको बेटा, ठीक है जी। पढ़ लेना इसको एक बार, कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना बेटा। Only 4 minutes are left. I'm going to move forward. बैग हाउस, अब बैग हाउस आ गया बेटा। बैग हाउस हम लोग मंडे कर लेंगे बिकॉज हमारा इस वीकेंड पे लास्ट लेक्चर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटे। सो बैग हाउस बेटा अब थोड़ा सा कर लेंगे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे को लास्ट टाइम बैग हाउस में, बैग हाउस पेपर में देख लिया होगा उन्होंने। अब करेंगे बैग फिल्टर्स, दीज आर कॉल्ड बैग हाउस फिल्टर्स बेटा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो 1-2 मिनट फिर हम डिस्कशन को वाइंड अप कर देंगे आज, ठीक है बेटा। सो ये भी एक कैटेगरी है रिमूवल की। अब ये कैटेगरी जो है ये फाइन पार्टिकल रिमूव करने के लिए, जो साइक्लोन से रिमूव भी नहीं होंगे बेटे, दैट इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर, अगेन वेरी फाइन साइज पार्टिकल्स। एप्लीकेशन कहीं भी हो सकती है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं, माइंड कर लो ये चीज के लिए कि हर बार डस्ट पार्टिकल यूज नहीं होगा बेटा। ये चीज डर्टी एयर बोल रहे हैं, जो डर्टी एयर बोल रहे हैं बाय जो नोटेशन है उसके लिए डर्टी एयर बोलते हैं, बट एवरी टाइम इट्स नॉट डर्टी एयर। The dirty air may contain a particles important for the industry. Okay, so what is exactly there in the bag house filter? थोड़ा सा बता दूं एक मिनट में, फिर उसको वाइंड अप कर दूंगा बेटा। So bag house filter में कुछ नहीं है बेटा। अगर आप see this, you have a bag filters. So commonly known as bag houses. These are the fabric collectors. क्या होता है, कुछ नहीं है। अगर आप देखते हो ना, ये देख रहे हो 1 2 3, ये देख रहे हो ना, ये आपके पास ये एक तरह के सिलेंडर्स हैं यहाँ पे, और ये परफोरेटेड है। ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसको, डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको। ये परफोरेटेड है, परफोरेटेड सिलेंडर। इसके अराउंड में एक फैब्रिक जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन रैप कर दूंगा इसके अराउंड, कर दिया। तो इसके अराउंड मैंने फैब्रिक जो है वो रैप कर दिया। फैब्रिक कुछ नहीं है बेटा, एक तरह का एक ही मेम्ब्रेन है, आपकी मेम्ब्रेन मटेरियल है जो रैप कर दिया मैंने। तो 1 2 3 3-4 बन गए। तो हमने इसको एक बैग हाउस में डाल दिया, ये पूरा बैग हाउस में डाल दिया। अब यहाँ पे हम विद हाई प्रेशर गैस एंटर करवाएंगे, जिसमें फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करना है आपने। और आपको पता है क्या होगा कि व्हेन द एयर इज बीइंग पास्ड, दे स्ट्राइक दिस काइंड ऑफ surfaces. Now the bag or membrane outside this particular thimble, they will retain the fine particles. जैसे फिल्टर करते हो आप लैब में, सेम चीज बेटे। और क्लीन गैस इस थंबल से होल्स होकर रखे मैंने यहाँ पे, इसके अंदर से पास होके गैस बाहर, ये देखो क्लीन गैस बाहर ऊपर से, और जो पार्टिकल्स हैं ड्रॉप डाउन होकर नीचे हो जाएंगे। इसकी डिटेल डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास के करूंगा बेटा। 10:30 इज देयर, सो आई स्टॉप हियर एंड